मैं अब पूरी आईलिड को तो इतना पार्ट होने के बाद अब मेरे को क्या करना है कि किसी भी डार्क कलर से उसकी क्रीज बिल्ड करने की कोशिश करनी है आँखों की डेप्थ के लिए। तो आई विल बी यूजिंग दिस ब्राउन शेड हियर। इसको फिर से एक्सेस को रिमूव करेंगे और फिर सर्कुलर मोशंस में अंदर आने की कोशिश करेंगे। I'll be building soft crease. अब मैंने थोड़ा सा टेक्सचर डेवलप कर लिया है अपने आँखों पे। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं हल्के ब्राउन कलर को डैप करूँगी यहाँ पे और इसको फिर से सर्कुलर मोशंस में। जब भी आई शेडो को आप पिक करें सबसे लाइटेस्ट कलर से स्टार्ट करें, देन डार्क 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 उसका ट्रांजिशन डार्क के साथ बनाएं। सो आई विल बी यूजिंग दिस पिंक कलर। नाउ एक और पीछी शेड है मेरे पास, ये वाला। इसको भी आल पर एक एक्सेस कॉइल ड्रॉप हियर एंड देन मैं मूव करूँगी बाहर से अंदर की तरफ को लाइक दिस इन सर्कुलर मोशंस। जो पर्पस था आईज को पहले स्टार्ट करने का मेकअप से पहले, दैट वाज कि जब हमारा ये एक्सेस ऑफ शैडो अगर हमारा नीचे गिर जाए कहीं पे भी तो हमारा मेकअप स्पॉइल ना हो। आई विल बी गोइंग विद फिंगर्स एंड मैं ये ब्लू शेड उठाऊंगी हल्का हल्का। मैं इसको भी ब्लेंड करूंगी। You can see the transition and now एक glittery shade लूँगी मैं like this। इसको अपने fingers की help से I'll be applying सिर्फ इतने पार्ट में। अब जैसे कि ऊपर मैंने डेप्थ क्रिएट करी अपनी आँखों की, ऐसे ही मैं
Now what I'll do is I'll take a beauty sponge and I'll just dab into my face. Dab, 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 dab. One extra coat of concealer. See. I have this foundation again by Oriflame. Dot dot dots. And I'll be going all over again with the beauty sponge. Be going in with this
I'll be doing lips. I'm taking Nika's lipstick in the shade Devil's Pink. So this was all for today's video. I hope you guys enjoyed this video and learned something from this. And अगर मेकअप से रिलेटेड और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Please give this video a big thumbs up if you liked it and subscribe to my channel. So stay at home, stay safe, and I love you guys.